corporate. My name is Ramesh Aggarwal. I'm past district governor. I was the governor during 2012-13 of both United District 3010. And I'm member of the Rotary Foundation WASH Major Gifts Initiative Committee. I am also in the board of WASH Rotary Action Group as the director, and Rotary Foundation has appointed me to serve as cadre technical coordinator for WASH for the next 3 years, ending 2025. So friends, we are delighted that we have large number of WASH champions present here in person, attending this seminar, and large number of other Rotarians and non-Rotarians across the globe who are watching this event virtually. And this clearly demonstrates that the Rotarians are really committed to the cause of WASH. Friends, the main objective of this seminar is to create awareness about the great work that we all do as Rotarians across the world in WASH area of focus. And we would also like to share our experience, expertise with various other stakeholders and partners engaged in water sanitation and hygiene. Friends, this will also be an excellent opportunity to motivate our fellow Rotarians and non-Rotarians corporate to support our WASH activities through their generous contribution to the Rotary Foundation through major gifts. We are privileged to have eminent personalities from the diverse background to speak on WASH and share their experience and expertise. I welcome Ms. Debashree Mukherjee, Senior IS Officer, Additional Secretary, and Mission Director, National Water Mission, Govt of India, Ministry of Jal Shakti. She is attending this seminar virtually as she is indisposed. Thank you, ma'am, for being part of this meeting. We are so grateful to you for your presence. We are also honored to have Ramveer Tanwar, जो पॉपुलरली PondMan के नाम से जाने जाते हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच अब ये भी ज्वाइन करेंगे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट प्रदीप मुल्तानी जी. He will just be joining us shortly. We also have Manish Wasuja. Has he come from UNICEF? So please join us on the stage. So he will be talking about community part of WASH. And I'm so happy that we have been joined by a very, very generous Rotarian, District Governor-elect, Pawan Agarwal, all the way from Rudrapur. And of course, both the governors from Delhi, District Governor Anup Mittal from 3011, and District Governor Ashok Aggarwal from 3012. And I'm also so happy that we have amongst us past District Governor J.K. Gort, past District Governor Ravi Chaudhary, District Governor nominee designate Mahesh Trikha, and so many other generous Rotarians from various places, not only from Delhi. And let me tell you, friends, there are many Rotarians who are present here from across India. And also, I'm so happy that we also have representatives from NGOs and corporates. So friends, now without taking much time, I would like to request District Governor-elect Anup Mittal from District 3011. And friends, for the sake of those who are not from Rotary, in Delhi, the Rotary has been divided into two parts. We have two districts, 3011 and 3012, and both the governors are present here. So first, I would like to request District Governor 3011 to share the kind of activities that District 3011 is doing in area of focus of WASH. Over to you, Anupji, please.
Thank you, Ramesh ji. Thank you so much. Good evening. Good evening. Thank you. I think protocol is well observed by our past Governor Ramesh Aggarwal ji, so I am not repeating and wasting time on that. But I can just say that I think water is the most critical area to work on. जहाँ मुझे लगता है नहीं रोटरी नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें काम कर रही है. 3011 के लिए बात करने के लिए मुझे बोला है रमेश जी ने, सो मैं आई टॉक ऑन दैट. सी 3011 की स्टोरी स्टार्ट होती है व्हेन द डिस्ट्रिक्ट वाज 3010, जब हम दोनों 3011 और 12 एक थे. एंड आई थिंक वाटर का मिशन उस समय स्टार्ट हुआ जब लेट सुशील गुप्ता जी वाज आरआई डायरेक्टर, पास्ट ट्रस्टी जो अब नहीं रहे, उन्होंने इसकी विज्ञान भवन से शुरुआत की थी. एंड दैट वाज आई थिंक द रेजोल्यूशन मेड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in presence of the president of the country that time and the Rotary. That was the start point. उसके बाद में कंसिस्टेंटली रोटरी के ऊपर हम लोग काम करते रहे डिस्ट्रिक्ट में. करीब करीब 250 से ज्यादा हम चेक डैम बना चुके हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में. आज उनके प्रेसिडेंट भी यहाँ पे मुल्तानी जी हैं, कादम्बरी जी उसकी सीईओ जो करती हैं काम, मैं इनको धन्यवाद कहूंगा. थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट सपोर्ट एक्सटेंडेड टू द डिस्ट्रिक्ट फॉर मेकिंग 250 चेक डैम्स. एक और हमने 3011 क्योंकि एक हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है बीइंग दिल्ली. शेखर मेहता जी जब प्रेसिडेंट बने रोटरी इंटरनेशनल के, तो उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया, रोटरी इंडिया वाटर मिशन. दैट वाज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली. एंड उसमें RIWM की हमने वाटर का एक वो दिया था. उसमें WATER वाटर में वाटर शेड्स था, अवेयरनेस थी. ए में टी में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज की बात की, आर में रिसाइकलिंग की बात की एंड वाटर हार्वेस्टिंग की बात की. ये सब के ऊपर बहुत सारा काम हमारे डिस्ट्रिक्ट में कंसिस्टेंटली होता रहा. हमने अभी इस साल में रिसेंटली हम 100 मिनी चेक डैम्स बना रहे हैं. आई मीन आवर एसोसिएशन विद पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज सो स्ट्रांग कि हमको कोई भी काम करना होता है वाटर में चेक डैम्स के लिए तो हमको सोचना नहीं पड़ता. एंड पीएचडी चैम्बर इज ऑलवेज विद अस एंड देयर फाउंडेशन इज विद अस. उनके साथ हमने अभी 100 मिनी चेक डैम्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनका. और हमारे करीब 25 लार्ज चेक डैम, लार्ज मींस जो करीब 10 लाख और 15 लाख रुपए की रेंज के बीच के होते हैं, विच इज ए साइजेबल चेक डैम्स विच इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस. वो इस बार चेक डैम बन रहे हैं. तो काफी सारा काम हम चेक डैम्स में कर रहे हैं, वाटर शेड बना रहे हैं. और एक चेक डैम बनाने से मैं बताऊं जो वाटर में है जानते हैं, करीब करीब से एक गाँव की 4 से 5 हजार पॉपुलेशन इम्पैक्ट करती है. वाटर लेवल बढ़ जाता है, ग्रीनरी बढ़ जाती है, वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है. हमने 2 चेक डैम में हमने वाटर ATMs की भी व्यवस्था की है कि जब पानी इकट्ठा हो ही गया है तो वाटर ATM लगा के गाँव वालों को स्वच्छ पानी मिल जाए, उसकी भी व्यवस्था की है. इस तरह का प्लान हमारा है. सैनिटेशन के अंदर हमने क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर है और हम लोग सब उसके ऊपर काम कर रहे हैं. वुमेन के का बड़ा जरूरी है. उसमें वुमेन के लिए सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है वो एजुकेट हो. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गर्ल चाइल्ड एजुकेट हो गई, उसको स्किल करना और एम्प्लॉय बनाना, ये हम 3 स्टेप लेते हैं. तो जब गर्ल को एजुकेट करना है तो सबसे पहले एनवायरमेंट देने की जरूरत है. स्कूल में एनवायरमेंट हो गर्ल के लिए तो सबसे जरूरी है हमारा टॉयलेट सेपरेट बने गर्ल्स के लिए. हमने 3011 में हजारों टॉयलेट बनाए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल टॉयलेट हो, कम्युनिटी टॉयलेट्स हो. दिस ईयर वी हैव कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी, हमने करीब 421 टॉयलेट हम गर्ल्स टॉयलेट बना चुके हैं जो ऑलरेडी अलग अलग स्कूल्स के अंदर बनाए. वी विल मेक गर्ल्स टू गो स्कूल एंड डूइंग दैट. हमने इस साल एक और जिम्मेदारी ली थी क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी. एक हमने गर्ल्स के लिए टॉयलेट बना दिए. उसके अलावा एक फिजिकल चैलेंज वुमेन का होता है, जा नहीं पाते स्कूल्स में ड्यूरिंग टाइम्स. तो हमने जिम्मेदारी ली थी कि हम 1 करोड़ सैनिटरी पैड बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्टअप करेंगे हमारे 3011 में. पहला प्लांट ऑलरेडी इन प्लेस है, हमने लगा दिया है. 9000 सैनिटरी पैड रोज के बन रहे हैं और रोटरी के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. हम 2 प्लांट और लगा के 1 करोड़ की कैपेसिटी अगले कुछ महीनों में बिल्टअप कर देंगे. फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बेनिफिशियरी तक पहुंचना, क्योंकि सब चीजों के अंदर बेनिफिशियरी इज द इंपॉर्टेंट. तो बेनिफिशियरी तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हमने कुछ NGOs के साथ टाई अप किया है. बड़े नए नए इनोवेशन आइडियाज ले रहे हैं. हमने RWS में बोला है जो जैसे जो मेड्स हैं आप सैलरी दें, उसके साथ उसको पैड्स दे दें, उसके घर में और भी है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दें. बड़े सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं. तो इस तरीके से हमने उस डायरेक्शन में काम किया. और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है CSR में काम हो रहा है. आई मीन CSR इज अ बिग असेट विद अस. हमने CSR में भी इस बार एक CSR अवार्ड्स किए थे साल के शुरू में 42 कॉर्पोरेट्स को बुला के, और हमने डेमोन्स्ट्रेट किया व्हाट रोटरी इज डूइंग ऑल ओवर द कंट्री. आई मीन यू विल रियली अमेज्ड टू सी और लर्न. उन्होंने हमको कहा कि आप हमको क्या अवार्ड कर रहे हैं, कॉर्पोरेट शुड रिकॉग्नाइज एंड अवार्ड यू फॉर डूइंग अ गुड वर्क बाय द रोटरी. I mean, that's what the image we have.
हमने, हमारे पास बहुत सारे कारपोरेट्स हैं जो वाटर में काम करते हैं। कोको कोला के साथ हमारा 50-50% का एक पार्टनरशिप है, कोई अगर करना चाहते हैं तो वो करें। तो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। सो आइडिया इज द वाटर में काम करने के लिए बहुत है। वाटर शेड्स बन सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज हो सकता है, जो रिड्यूस एंड रिसाइकलिंग का, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग का है। फिर एरेटर्स के ऊपर हमने काम किया, हम थाउजेंड्स ऑफ एरेटर्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग जो टैब में लग जाते हैं और वाटर सेव होते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग तो इज वेरी कॉमन, जब जहाँ लगता है फ्यू थाउजेंड वी हैव ऑलरेडी डन। तो आई थिंक हमने जो बेस्ट हो सकता है हम कर रहे हैं वाटर के अंदर। कॉर्पोरेट फंड्स इसके अंदर पुल अप हो रहे हैं, ग्लोबल ग्रांट्स, फाउंडेशन हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है, थैंक्स टू रोटरी फाउंडेशन। ये 25 चेक डैम और ये 100 जो मिनी चेक डैम, हम सब ये फाउंडेशन के थ्रू ही कर रहे हैं। शकुंतला जी आई हुई, अरविंद, अश्विनी जी हैं और संजय परमार जी, दे आर ऑलवेज अहेड। एंड मैंने एक चीज देखी है, आप वाटर का कोई भी प्रोजेक्ट लॉग इन कीजिए ग्लोबल ग्रांट में, इट इज जस्ट लाइक अप्रूव्ड वेरी फास्ट। I mean, the kind of reliability we have with foundation, with the water projects, they are always supporting and doing this. So thank you so much, Rotary Foundation, for supporting that. So I think I have taken enough time, Ramesh ji. So thank you so much. And इतना काम है, हम और 2 घंटे बात कर सकते हैं, but I think I have given a glimpse. And हमारा commitment है to work on this. इस साल, आने वाले सालों में भी हम consistently काम करते रहेंगे. And I think we will do pride to Rotary and pride all of us that we are working so nice in 3011. Thank you so much. Thank you so much, Governor Anup Mittal, for sharing the wonderful work being undertaken by Rotarians in District 3011. Now, I would like to invite District Governor Ashok Aggarwal to share with us the kind of wash work that Rotarians in District 3012 are doing. Thank you, Past Governor Ramesh Aggarwal. Dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, Rotarians, Rotary Foundation से शकुंतला जी और अश्विनी जी, एंड गेस्ट। जैसा कि अनूप जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाई अगर मान लो इंडिया में अगर वाटर और चेक डैम की बात शुरुआत की तो हमारे लेट श्री सुशील गुप्ता जी ने बात शुरू की थी, और आज वो है कि आज ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉश पे कितना बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। आज खाली इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत काम हो रहा है। ये एक फोकस एरिया है फाउंडेशन का, और इस पे डिस्ट्रिक्ट 3012 भी इसमें लगा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट 3012 बहुत काम कर रहा है इसमें। हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम काम करने की। इसमें हमने इस साल करीब 10 करोड़ रुपए के हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ग्लोबल ग्रांट्स के थ्रू। करीब करीब मेरे ख्याल से 50 स्कूल में हम इसमें काम कर रहे हैं, और भी सारे क्लब्स मिलकर कहीं ना कहीं स्कूल में कोई टॉयलेट ब्लॉक्स बना रहा है, कोई वाटर सैनिटेशन का दे रहा है, कोई हाथ वॉश इन हैंड का सिस्टम लगा रहा है। हर क्लब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने पर लगा हुआ है। इस बार हम चेक डैम्स में भी हमने काम किया है। हम पीएचडी हाउस के थ्रू इस बार डिस्ट्रिक्ट 3012 ने, दिल्ली अशोका ने 3 चेक डैम हम सीकरी डिस्ट्रिक्ट में हम लगाने जा रहे हैं। बड़े चेक डैम हैं, और वाटर बॉडी रिजनरेशन का भी हमने जलालाबाद में हम काम शुरू किया है। इसके साथ साथ लोगों को वाटर, क्लीन वाटर मिलने के लिए अगर या तो उनको बोतल खरीदनी पड़ती है, नोएडा जो मैं बात कर रहा हूँ, नोएडा का एरिया जो है वहां पर पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वहां जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो बहुत गंदा है। तो वहां मैक्सिमम हाउस होल्ड्स को ये 20 रुपए की या 25 रुपए की बोतल लेनी पड़ती है पर डे, 20 लीटर की। तो हम मोबाइल वैन्स लगा रहे हैं हम ग्रांट के थ्रू, और 4 वैन्स हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, और इसका 10 तारीख को हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को 1 रुपए पर बोतल, 20 लीटर की 1 रुपए पर बोतल हम लोगों को घरों पे जाके देंगे, लोगों को घरों पे जाके देंगे। साथ साथ सैनिटरी पे कम से कम हम ऑलरेडी करीब 25 लाख पैड ऑलरेडी बांट चुके हैं इस 21-22 में, और कम से कम हम 400 से 500 वेंडिंग मशीन स्कूल्स में लगा चुके हैं। और बहुत सारे क्योंकि काफी दिन बाद स्कूल खुले हैं,
तो बहुत सारे स्कूल्स को जरूरत थी टॉयलेट ब्लॉक्स की। कम से कम हमने इस साल 50 टॉयलेट ब्लॉक्स जो है गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए अलग अलग बनाए हैं अलग अलग स्कूलों में। ये ऑलरेडी हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ साथ बात चल रही थी मेरी रमेश जी से, रमेश जी का फोन आया कि भाई बोले कि भाई हम वॉश पे एक मीटिंग करने जा रहे हैं और आपको ऐसा है कुछ फंड इकट्ठा करना है। कहा भाई साल जब जाती होती है तो कोई फंड देने को तैयार ही नहीं होता, और ये जब बात चली कि भाई कितना कि भाई कम से कम मतलब एक एंडोमेंट तो आप कर दीजिएगा $25,000 की। मैंने कहा आपने कह दिया, चूंकि जिम्मेवारी भी ज्यादा है, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से हैं और रमेश जी हैं तो बट नेचुरल काम करना जरूरी था। मैंने हाथ के हाथ कहा कि मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं $25,000 की कम से कम आपको एक उस दिन एंडोमेंट जरूर दूंगा। और ये बात ज्यादा दिन की नहीं है, ये मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा, मैंने साथ के साथ हाथ के हाथ पूछ लिया, मैंने कहा आप क्या दे रहे हैं सर जी? क्योंकि वो देखिए इकट्ठा तो सामने से ही करना है ना, तो पहले इनसे ही पूछ लिया। तो तुरंत 1 सेकंड भी इनको गवाए बगैर बोले मैं उस दिन वॉश पे $30,000 आपको दूंगा, जो इसमें टर्म गिफ्ट होगा। और साथ में मैं बताता हूं, मतलब 8 दिन की बात है मैक्सिमम, मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन की बात है जब मेरी एंडोमेंट फंड के लिए बात हुई थी, और आज $30,305 ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं। हमने $25,000 का आपको अश्विनी जी आपको भेजा है, तो उसको एक्सटेंड कर लीजिएगा और उसको $30,000, और कल आपको सारे चेक्स मिल जाएंगे। तो ये ऑलरेडी ये पिछले 8 दिन में, क्योंकि चूंकि रमेश जी ने जो है हमारे को कहा, और दूसरा हमारे DRFC शरद जैन जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर बड़े भाई JK गौड़ साहब हैं, इनकी मदद इतनी ज्यादा मिलती है कि मेरे को कोई काम करने में दिक्कत आती ही नहीं है। वास्तव में ये बहुत अच्छा काम है। शायद मेरे ख्याल से अगर वाटर एंड सैनिटेशन जो वॉश का है, अगर मान लो ये पहले से अगर और पहले शुरू होता तो शायद पोलियो और जल्दी मिट जाता। बहुत सख्त जरूरत है वाटर और सैनिटेशन दोनों की, इस पे काम करने की हमारी कोशिश है। मैक्सिमम और काम करेंगे। अभी जितने मेरे ख्याल से 56 या 57 दिन बाकी बचे हैं, 56 दिन, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें और बाकी का जो मैक्सिमम काम हो सकता है वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रमेश जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात मैं भूल ही गया, आज हम डिस्ट्रिक्ट 3012 से PhD हाउस से एक हम MOU साइन करने वाले हैं, जैसा कि अनूप जी पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि PhD का काम और रोटरी का काम दोनों का बिल्कुल सेम है। इसमें हम सोशल नेटवर्किंग, मेंबरशिप और सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब साथ साथ मिलकर करेंगे। कोशिश करेंगे हम एक दूसरे को मैक्सिमम जितना ज्यादा एक दूसरे के लिए कर सके वो करेंगे, और आपने उसके लिए हाँ किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू शकुंतला जी और अश्विनी जी, ये वास्तव में आप लोग हमेशा हमारा साथ देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच अशोक जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जिस कमेटी का मैं मेंबर हूं, हमारा टारगेट है $50 मिलियन 2025 तक इकट्ठा करना अक्रॉस द ग्लोब। ये 5 मेंबर की कमेटी है। सो दिस इज आवर जॉब। बट जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा हमारे रोटेरियंस ही खर्च करेंगे वाटर सैनिटेशन हाइजीन पे। जो आप ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट्स करते हैं वो वहीं से वो पैसा आता है, अलग अलग एरिया ऑफ फोकस में पैसा बढ़ जाता है, और द मनी कम्स फ्रॉम देयर ओनली, जो ग्लोबल ग्रांट्स आप करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम the president of PSG Chamber of Commerce, Pradeep Multani ji. He is also a Rotarian. I don't know how many of you are aware of this or not. ये 2011-12 में he was the president of Rotary Club of Delhi Midtown. So friends, let us watch some videos on WASH.
अब है तालाब सीवेज टैंक की तरह, क्योंकि जितना भी सीवेज निकलेगा वो सीधा जाएगा। दूसरा, गांव में जल्दबाजी में लोगों ने कई बार सेप्टिक चैम्बर से लिए, उन्होंने अपना सीधा शौचालय से पाइप निकलता है नाली में, नाली जाती है सीधा तालाब में, तो जो भी ह्यूमन वेस्ट है वो डायरेक्ट तालाब में। मेरा एक्चुअली प्रयास है कि जो तालाब मर गए हैं या अब वो तालाब जैसे नहीं दिखते उनको तालाब जैसा दिखाऊं, और जो जिस उद्देश्य से तालाब बनाए गए थे वो उद्देश्य पूरा करें तालाब। Growing up in a village in Greater Noida, Pawan has played an intrinsic part of Ramveer Tanwar's childhood. But over the years, as concrete jungles exploded into lives and ponds and lakes turned into dumping grounds, that inherent connect to the neighborhood water body was slowly lost. जब मुझे नजर आए वो तालाब जिनके किनारे पर बचपन में खेले, जिसमें हमने लोगों को नहाते हुए देखा है, और अभी वो बिल्कुल एकदम भी याद जैसे होता है, उसमें अगर आप डर लगता है कि अगर पानी में हाथ भी लगा दें तो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। ऐसे तालाबों को देख के लगा कि यार 10 साल में इतना चीजें बदल गई कि जिन बच्चों को नहाते हुए देखा है और वो वहां पर खबरें आती हैं कि कोई जंगल में सबके बच्चा है। तो मुझे लगा कि यार हमने चीजें देखी हैं लेकिन और हम नहीं देख पा रहे, अगली पीढ़ी को देखना भूल ही जाएगी। A single act of good can go a long way. It can cross oceans, cure disease, and create equality. As members of Rotary, we are people of action, and our actions have the power to speak loud and clear. We're changing lives and creating opportunities through our groundbreaking work in clean water, sanitation, and hygiene. Our global grants help communities create and maintain water resources close to home, because when clean water is within a child's grasp, so is a safe and promising future. We're committed to supporting sanitation projects that meet the needs of women and girls. Our programs provide modern facilities and hygiene training to cultivate long-term health and wellness. From safe access to water to private toilets and programs to teach healthy habits, we're working in homes, clinics, and schools to help families live healthy lives. Rotary Club members unite to create a world where water, sanitation, and hygiene are cornerstones of self-confidence and dignity, well within the reach of families who need it most. With more than a century of experience and service, Rotary is uniquely positioned to meet the challenges of today and fulfill the promise of a peaceful, healthy tomorrow. Your contribution to the Rotary Foundation keeps families connected to a world of good. Every gift is an action that speaks volumes across classrooms, communities, and continents. Learn how you can support the cause that means the most to you. प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ रोटरी क्लब प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए भी काम कर रहा है, जिसके तहत आंगनबाड़ी के हाथ पकड़ने का लगातार प्रयास जारी है। रोटरी इन सभी केंद्रों के अपग्रेडेशन के साथ साथ यहाँ पर नए 6 साल तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को सुधारने पर भी जोर दे रही है। प्रोग्राम का मकसद छोटी उम्र में ही बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाना है, जिससे ड्रॉप आउट रेट में कमी आए और आगे भी गवर्नमेंट स्कूल के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके। भारत में
छात्राओं का ड्रॉप आउट रेट एक समस्या बनता जा रहा था, जिससे बहुत से कारण थे। रोटरी इस समस्या के समाधान के लिए आगे आई और पाया कि स्कूलों में शौचालय की कमी छात्राओं के ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा कारण था। इस समस्या से निपटने के लिए रोटरी फाउंडेशन ने बड़े कॉर्पोरेट के साथ मिलकर महाराष्ट्र और हरियाणा के कई स्कूलों में सैनिटेशन को दुरुस्त करने के लिए टॉयलेट्स और हैंड वॉशिंग स्टेशन का निर्माण करवाया। इसके तहत टीचर्स को सैनिटेशन टेक्निक की ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रोग्राम को उत्तराखंड, तमिलनाडु, यूपी, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में भी शुरू किया गया है। Friends, these are some of the works that Rotary clubs undertake across India, not only across India, but across the clubs. So friends, we are not only involved in building toilets in schools, but we are also engaged in so many other kind of activities in WASH area of focus. So I would like to provide you an overview of what Rotary clubs are doing in India in WASH area of focus. So can you start the presentation, please? Okay, friends. For the benefit of those who are not from Rotary, I would like to share with you that in Rotary, we have 7 areas of focus. And whatever we do in Rotary, our service initiatives are within these 7 areas of focus. But water, sanitation, hygiene, WASH is integral part, central focus, focal part for achieving success in any of these areas of focus. So in other words, we can say that WASH is precursor in achieving success, whether we talk about basic education literacy, whether we talk about disease prevention and treatment, maternal and child health, building peace, economic and community development, and so on and so forth. But WASH is the precursor. Unless we tackle WASH challenges, WASH intervention, we won't be able to achieve success in any of the remaining areas of focus. So friends, let me share with you some of the global challenges that you come to know that why WASH is so important today. Today, 1/3 of world population lacks access to sanitation. Around 10% of global population lacks access to water. 1.1 billion, that is 15% of the global population practice open defecation, as I said. 1 in 5 deaths in schools is only due to poor water, sanitation, hygiene facilities. And 45% of schools in developing nations don't have access to adequate water and sanitation. And nearly 80% of deaths in developing countries are associated with poor water, sanitation, and hygiene. So you can just imagine the kind of challenge that we have. Friends, talking about water challenges, our land mass, the global share of land is around 2.4%. The global share of water resources, talking about India, is around 4%. And we have our 17% share of global population. So you can just imagine we have only 4% of water resources available to us, as compared to 17% global population that we have in India, the share of global population. So look at the challenges. The large number of cities, more than 20 cities, don't have adequate water. Huge challenge. 650% of population in India lack water shortages. And in 2019 March, a survey carried out by Govt of India revealed that only around 18% of households in India, we have around 17.87 crore households in India, only 18% of those had
individual household tap connection. So you can just imagine the kind of challenge that the India faces. So just look at this slide. Water availability is going down tremendously. It used to be more than 5,000 cubic meter per capita per annum, which has now gone down to approximately 1,300. And by 2025, this is going to further go down. But the another challenge that we should try to understand that where the water is being used, you will be surprised to know that in India, 83% of water gets used in agricultural purposes. Only 5% for drinking water. Only 5%, 83% goes towards agriculture purposes. So you can just imagine even much more than look at the previous. In China, if you compare, the India with China, in India, we spent about 11 cubic meter of water in growing 1 kg of crop, as compared to China, where the water use is only 1.9 cubic meter. So you can just imagine the kind of water is being used in agriculture. And that is why in Punjab, my dear friends, the water level is going down day by day. So there is a huge challenge. And that is why Government of India came out with Sahi Fasal in 2019. So friends, the sanitation challenges, although India achieved open defecation free status in 2019, where over 4,000 cities self-declared themselves as open defecation free, and more than 6 lakh villages declared themselves that we are now open defecation free. But still, there are millions of households which don't have functional toilets. So there is a challenge. Talking about schools, although the water sanitation hygiene coverage, individually speaking, has crossed more than 90%, but collectively, only 55% of schools have all 3 facilities: hand washing, water, and sanitation with soap. So there is a challenge. Talking about washing healthcare facilities, we have around 31,000 healthcare facilities across India. Only 7% of these facilities don't have water, and 45% of these facilities don't have adequate sanitation. So there is a challenge. Just look at this in India. Every day, my dear friends, over 300 children die due to poor water sanitation hygiene. And you can just see in this slide, reduction in morbidity, if we can provide intervention. These are 5 activities I have listed. Just by implementing hand washing, practicing hand washing with soap at critical times, we can reduce diarrhea morbidity to the extent of 44%. By practicing good hygiene habits, 42%. If you can improve the quality of water, 39%. Sanitation intervention, 36%. And 23% by ensuring good water supply of water without any contamination. So you can just imagine every activity, every aspect of WASH has a relevance. And let me share with you this SDGs. Many of you must be aware of the Sustainable Development Goals. These goals are set every 15 years. In 2015, more than 119 countries assembled, and we call it United Nations General Assembly. They decided to go for these 17 goals. And most of these goals are interconnected and linked with somehow or other with water sanitation hygiene. But these are 2 goals, the goal SDG 3 and SDG 6, which are directly connected with water. SDG 6 talks about providing equitable access of water and sanitation to every person in this earth by 2030. And SDG 3 talks about good health and well-being of every individual. The maternal child health, you will be surprised, currently 145 mothers die of 1 lakh newborn babies. Talking about neonatal deaths, under 5 deaths, neonatal deaths, more than 20 per 1,000 newborn babies. And talking about
under 5 deaths, 25 per 1,000. So you can just imagine the kind of challenge that our country, India, faces today, in spite of tremendous strides made by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. So talking about what Rotary is doing, how Rotary is changing lives, making an impact through WASH intervention. Friends, I would like to share with you, the Rotary during the last 7 years have invested more than 1,130 crores of rupees in terms of US dollars, $153 million we have spent. And you will be surprised to know 39% of WASH activities happen in Asia and 23% works take place in our country, in India. And we have invested through global grants over 180 crores of rupees during the last 7 years. And we have done large number of more than 400 global grants during the last few years. But friends, this is just an ice of the tip of the iceberg. Our work is more than 10 times. How many of your clubs undertake projects under global grant? Only few clubs. In every district, not more than 10 or 15 clubs undertake global grants. So our work is at least 10%. So when I say 180 crores, the Rotary must have invested more than, I would say, 1,000, approximately 2,000 crores of rupees during the last 7 years in WASH area of focus. So this is how Rotary makes an impact. And whatever Rotary spent, the money comes from Rotarians, generous Rotarians like you. So friends, in India, talking about India, we have implemented WASH in schools, over 30,000 schools during the last 7 years, starting from 2014, where the Rotary India decided to support Swachh Bharat Abhiyan launched by Honorable Narendra Modi ji. MOU was signed in Chennai Institute in 2014 in front of then Urban Development Minister Venkaiah Naidu ji and currently Vice President of India. And since then, there has been no looking back when what the Rotary, the way the Rotary is supporting. We have also constructed more than 150,000 1.5 lakh toilets, household toilets, community or public toilets हम लोगों ने बनाए हैं. We have provided safe drinking water in large number of communities across India. In South India, it is a very, very program, very popular initiative where we provide drinking water in communities. We have also built more than 1,000 watersheds. And we have, achieved a sustainable impact in more than 1,000 villages. And we have been able to touch more than 70,000 households and benefiting over 1 million people. So this is what Rotary has achieved till then. These are some of the photographs, friends. But let me share with you, just to build on the success of what Rotary clubs in India have been doing in 2019 under the leadership of our current Rotary International President, Shekhar Mehta. It was decided that the Rotary needs to expand its reach, expand its scale and scope. And the meeting was held in Delhi, and it was decided that the Rotary now onwards is going to focus on these activities. You can see watershed development, transformation of water bodies, rainwater harvesting, supporting Jal Jeevan Mission, wash in schools and wash in healthcare facilities, and building household, community and public toilets. So this is what it was. It was also decided कि जो भारत सरकार का लक्ष्य है उसका 10% रोटरी करेगी. ये हमने वादा हमारे प्रधानमंत्री जी को किया और उसमें रोटरी लगी हुई है. दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ, इतना काम अभी दोनों गवर्नर्स ने जो आपको शेयर किया, ये 40 में से 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, 38 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग जगह पे. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना काम रोटरी कर रही है. So this is watershed development, construction of check dams. The Governor Anup Mittal has already shared the kind of good work being done by Rotarians in 3011. So these are different kinds of check dams. I don't want to go into the technical part of it, but our goal is to build 10,000 check dams by 2025-26, and goal for this year is building 1,000 check dams. And I'm happy to share with you that we have already achieved our goal for 2021 and 22. So you can just see the difference. This is a check dam in the Sikar district,
Bandai wala check dam, Sekhar, I think the project has been implemented by PSD only. And you can just see the difference in the, before you just see the brown and you can see the green after. You can just see an impact such kind of projects can create. There is another, this is another check dam in Sikar only, Joshiwala check dam, where the capacity is 7.28, 7,28,000 cubic feet की capacity है इसमें. This is again done in Sikar district, I think by PSD only. And this is the transformation of water bodies is another. अगर आपने नरेंद्र मोदी जी का अभी हाल में इन्होंने मन की बात में ये एक ये मैसेज हम सबको दिया है कि केवल हमको ट्रांसफॉर्म करना है, बट हम नए स्रोत, हम नए इस तरह के पॉन्ड्स, लेक्स को हम बनाएं. और उसमें अभी मैं पीछे हाल में अभी सेक्रेटरी मैडम हमको एड्रेस करेंगी मेरे इस एड्रेस के बाद, तो वहां उन्होंने कहा कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड फुल सपोर्ट. अगर आपको इन जो लेक्स को कहीं खोदने की, पॉन्ड्स को खोदने की जरूरत होगी तो वो सारा काम NHAI हमारे लिए करके देगी. तो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव. रामवीर भी इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में. आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ टाइम. यू कैन जस्ट सी दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय रोटरी क्लब ऑफ Madras. You can just see the before and after. Rotary Club of Madras, there are so many clubs in Chennai who are engaged in the transformation of water bodies. They have already implemented such kind of projects in 18 lakes. Rainwater harvesting, we all know, I don't have to talk much about it. Our goal is implementing rainwater harvesting in 30,000 properties, and our goal for this year is 5,000. And you can just see the benefits of watershed management. Household tap connection, Jal Jeevan Mission, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, इसमें भी our goal, my dear friends, is 1,000 villages, and goal for this year is 180. Here the Rotarians can play a pivotal role. The hardware part can be taken care of by the government, as the government has informed us. What Rotarians can do is we can take care of the software part of it, operation and maintenance, providing skills, the training. So those kind of things Rotarians can do. So we can adopt cluster of villages. एक बार हमने 30-40 गांवों को एक साथ ले लिया और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करता, एंड सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर ग्लोबल ग्रांट्स. WASH in schools is our flagship program. As I already told you, we have already implemented WASH in 30,000 schools. So there are around 15 lakh schools right now. These are out of these schools, 70% are government schools, the rest are all private. But the challenge is, in spite of so much of WASH intervention, only 55% of schools in India have all three facilities put together: water, sanitation, and hand washing with soap. So this is where the Rotarians can play a pivotal role. So these are the different activities. You can just see the benefits that we can get out of this. And our goal, my dear friends, is implementing WASH in 25,000 schools by 2025-26 and 5,000 during this Rotary year. WASH in healthcare facilities is another emerging area under WASH. And as I already told you, we have 31,000 healthcare facilities in India, including big hospitals, starting with primary healthcare centers. And 7% of these don't have water. 45% of these don't have adequate sanitation facilities. And healthcare workers don't practice good hygiene practices. So the impact is what? Let me tell you. The 10 people who go to hospitals, 1 out of 10 comes back with some sort of disease. So we call it HCAI, healthcare associated infection. So you can just imagine the kind of poor hygiene facilities that we have in hospitals. There is another, this thing, anti-AMD, antimicrobial disease. And by 2050, if no proper intervention takes place, then 10 million people will die every year because of AMD. So you can just imagine. So this is a new area of focus.
where Rotary International is laying a lot of focus. Our WASH Rotary Action group has come out with new proposals, new plan. So it is a time, and the COVID has taught us कि अगर हम अच्छे हाइजीन को अडॉप्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो सही समय है दोस्तों, हम इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दें, और अपना गोल है 500 फैसिलिटीज में इसको इंप्लीमेंट करने का 2025-26 तक, और इस साल हमने 25 का वो किया है। और some clubs have already started implementing washing healthcare facilities. So these are household toilets. Friends, I don't have to talk much about it. I don't see past District Governor Manjeet Sahni. He has been spearheading this project, and I went to this अलवर के पास नू इलाके में मेरे को एक बार लेके भी गए थे ना। I was amazed. 500 से ज्यादा उन्होंने, बल्कि 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा हाउस होल्ड टॉयलेट्स इन्होंने बनाए हैं। और हाँ, 350 तो इसी साल। आप देखिए कितना काम हो रहा है, कई बार हमको पता नहीं चलता कि काम कितना हो रहा है। एंड आवर गोल इज 1,20,000 हाउस होल्ड टॉयलेट्स बाय 2025-26 and 20,000 during this Rotary year. So these are some pictures of public and community toilets. There is a huge potential. और मेरी होम क्लब भी एक पब्लिक टॉयलेट दिल्ली में पिंक टॉयलेट्स के नाम से ग्लोबल ग्रांट हमने उसका डाला है, और हम यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं। तो बड़ा मेन्यू है हमारे पास, जो हम अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ आवर CSR पार्टनर्स हु हैव बीन सपोर्टिंग अस। KEI केबल्स वाले सपोर्ट कर रहे हैं, नैनी वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, पवन अग्रवाल जी, इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट से अनिल महेंद्रू, EMU लाइन्स, और 3011 में भी देयर आर सो मेनी कॉर्पोरेट who are supporting Rotary and supporting us through their CSR grant. So friends, okay, I was talking about contribution. देखो Rotary में बिना पैसे दोस्तों कोई काम नहीं होता, और मेरा काम है फंड रेज भी करना वॉश के लिए। रमेश अग्रवाल अपने लिए करना, कॉज के लिए कर रहा है, रोटरी फाउंडेशन के लिए कर रहा है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, अशोक जी ने, मैंने कहा कि कुछ फंड रेजिंग करनी है तो इन्होंने ऑलरेडी चालू कर दिया है, बहुत अच्छा है। और आप में से भी आज हम सबको सुन के, अगर आपको कोई इच्छा हो कि मेरे को पैसा रोटरी फाउंडेशन में जाएगा, आपके नाम पे ही जमा होगा, जिस क्लब से आप देंगे उसी के खाते में जुड़ने वाला है, बट ये वॉश एरिया के अंडर टैग हो जाएगा। और बहुत अच्छा वो है, अगर कोई $30,000 डायरेक्टेड गिफ्ट के नाम से रोटरी फाउंडेशन को देता है इंडिविजुअल, सो वो पैसा कभी भी यूज हो सकता है, कभी भी यूज कर सकते हैं। जब तक आप उसको टैग नहीं करोगे किसी प्रोजेक्ट के साथ, वो पैसा आपके खाते में एज इट इज पड़ा रहेगा, लेकिन वो पैसा यूज होगा वॉश के लिए। दोनों गवर्नर्स यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं आप दोनों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कुछ आपके पास DDF है तो कुछ DDF यू कैन एलोकेट फॉर वॉश। वो पैसा कहीं ना कहीं अक्रॉस द वर्ल्ड वॉश प्रोजेक्ट्स पे कहीं ना कहीं यूज होगा। विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मैडम देबाश्री मुखर्जी, सीनियर IAS ऑफिसर। आर यू देयर मैडम? Yes, I'm here. Thank you. Okay, great. So let me provide a brief introduction of Debashree Mukherjee ji. She is an Indian civil servant who has worked in various positions in Government of India at the central level as well as in the state governments. She has a master's degree in linguistics and English and another master's degree in water and environmental management. She has worked in the administrations at the National Capital Territory of Delhi, the coastal state of Goa, and in the northeastern hill state of Arunachal Pradesh. During her various assignments in government, she has specialized in urban governance and management of water and sanitation services. In the National Capital Territory of Delhi, she worked as the Chief Executive Officer of Delhi Jal Board, which provides water and wastewater management services to about 16 million people in the city of Delhi. She has also been chairperson of Delhi Transport Corporation. She has worked as the Joint Secretary in the Office of Prime Minister of India on the areas of public health and nutrition, rural and urban development, housing and poverty alleviation, water resources, drinking water and sanitation, social justice and inclusion. She has worked on the design and implementation of transformational programs such as Swachh Bharat initiative to eliminate open defecation in the country, and POSHAN, the National Nutrition Mission to reduce malnutrition. At present, she is the Additional Secretary and Mission Director
of National Water Mission, Ministry of Jal Shakti, Government of India, working on a range of issues related to water management. It is my proud privilege to invite Debashree Mukherjee ji to speak on WASH, a priority program of a flagship program of Government of India. Over to you, Madam. Namaskar. Am I audible? Thank you very much for that very, very generous introduction. Eminent Rotarians and friends, I would have been very happy to be here physically with all of you today, but because of COVID, I am in isolation till Saturday, so I wasn't able to come. So, but thank you for giving me this opportunity. I hope I'm audible to everybody here. Okay, thank you. Right. So I think my previous speaker spent quite some time talking about the challenges before us. So I will not really focus on numbers. What I will say is that I think everybody here recognizes how critical water is for lives, livelihoods, incomes, and how scarcity of water affects the poorest and the most vulnerable first. We all understand that when there's water scarcity, when groundwater levels drop, when we have heat waves, who are the people who get affected first? The poorest, women, children. So water security for the country and quality wash services are critical, not just for the nation's development, but also for equity. I think we all understand that. I also want to just make one more point, which is that frequently in water management, groundwater and wastewater are invisible. Because groundwater, we all use it. We all use it in one way or the other. But most of us don't realize, we don't even focus on what the quality of groundwater is. What is the availability of, do we know what is the availability, what is the groundwater table for us? And wastewater, most of us, once it's disposed, it's gone. So we don't know where it's going, what it's contaminating. So I talk about groundwater and wastewater as invisible and which need to be made visible to everybody for better water management and for the water security of the country. I'll make a couple of points, just a couple of points on the overall context. What are the challenges? First, we know that India has 4% of the freshwater resources of the world, and we have 18% of the world's population. So a huge mismatch. But also that this available water, there is a huge disparity in this availability over regions and also over time. So most of our rain comes in 2 months. So all available water that we have is in 2 months. And therefore storing that water, making it available. So there is huge spatial and temporal variability in the water availability in the country. And this situation is likely to be aggravated by climate change. We are already seeing this. We are seeing longer dry spells. We are seeing more intense precipitation events causing urban flooding, as well as major disasters. So even if you're looking at climate change issues, even if you're looking at climate change mitigation, water management is extremely critical. The last thing that I'd like to flag is that India, our federal system, and all of you know that water is a state subject. So what is the role of Government of India in this context? Government of India really plays a nudge role. The nudge role is by setting goals. So with the Jal Jeevan mission, with the Swachh Bharat mission, there is a goal: universal access to sanitation, universal access to household water connections. Government of India sets the goals, the states implement it. The second role that Government of India has is to provide
resources. So you provide fiscal support, you provide technical support, but also you try and mobilize, groups, opinion makers, organizations like Rotarians who are, public service, civil society organizations. So this nudge role has multiple aspects. But the action lies in states, the action lies with stakeholders, which is why our Prime Minister says again and again that our success lies in making water everybody's business. So therefore, given this context, what is our big goal? The fact that, water is likely to become, with growing population, there's more pressure on water, groundwater reserves are under stress, the surface flows are becoming more variable because of climate change. So what is it that we are going to do to improve water security? One is increase storage. And how do you increase storage? You're looking at both groundwater, because groundwater, below ground storage is one of the biggest storages that we have. So increase storage so that you have stored water available. The second is improve water use efficiency. You heard that 83% of the water that is used for agriculture. And water use efficiency in agriculture in India is assessed at 38%, which is very, very low. So one of our low-hanging fruits is to try and improve water use efficiency in agriculture. So that's one of the major goals. The third area is universalize access to water and sanitation services, where we have had some success, which is our Swachh Bharat Mission and the Jal Jeevan Mission. I will touch upon some of our actions now. The three areas of work I spoke about, I will talk about some of our actions and some of our major programs, and then I will focus on the one major program where I need support from everybody gathered here today, where I think we cannot achieve anything if people like you don't come forward to help. One is, of course, there has been since the last 8 years a significant focus on holistic water management. See, water was frequently treated in silos. Urban did some water management, then there were the wash services, then there was the water resource management. However, wash services cannot be sustained if you don't have holistic water resource management. You can provide taps in houses, you can provide a tank, you can provide a water connection, but if you don't manage the water source sustainably, then you're going to go back and make that investment over and over again. So to do that, the Ministry of Jal Shakti was created by bringing the service delivery side, which was drinking water and sanitation, along with the water resources side. So bring water resource management and provision of services together. The second important thing was the focus on universalization of services. So the Swachh Bharat Mission and the Jal Jeevan Mission, which are not just about building toilets or not just about providing taps in households, they're also about behavior change. If we provide toilets and people don't use them, then it's not really achieving its objective. So the issue is, bring communities together, create awareness, ensure that there is behavior change so that these programs are sustainable and they actually achieve the objectives. The third big push was river rejuvenation and holistic river basin management, which was the Namami Gange program. Now, the Namami Gange program actually showed us that if we treat, the river as a whole, river basin as a whole, which is not just, first start off with ensuring that no dirty water flows into the river, but then also look at other issues of river health, which is about ensuring environmental flows in the river, then you can improve the results in terms of river health. Learning from this program, we are now going forward to try and address 6 more major rivers of the country.
So this will be our next step forward. Then the other big program that we are implementing, and this is a pioneering program that India is doing. And we are hoping that, what we learn from this, we can teach the world, is what we call the Atal Bhujal Yojana, where villages are coming together to assess their own groundwater, plan their own groundwater use, so that their groundwater can be used sustainably. And as a part of this, they're creating their water security plans and implementing their water security plans and ensuring that there is enough water available for drinking, sanitation first, before it is diverted to water guzzling crops or things like that. So this is an important program that is happening in 81 districts across the country. If it's successful, we will take it to more areas. Another interesting, I don't know if it's, just for interest, this is a major program to combat climate change. I don't know if you know that India is implementing the largest dam rehabilitation program in the world. We have the third largest number of dams in the world. And with various factors, it is more and more difficult to build new dams. So therefore, this program is to ensure that the existing water infrastructure that we have is, their lives are elongated so that we get more value for our money. So this dam rehabilitation program, we are rehabilitating 800 dams across the country. This is actually a major climate change mitigation program. Rehabilitating one dam, creating more storage, improving the storage in that dam is equivalent to building another dam. So these are some of our major initiatives. Now, finally, one point that I'd like to make, that there are two common threads that run through all our programs. One is, we are conscious of the fact that climate change is threatening our water security. And therefore, all these programs have a very strong component of mitigating climate change. So how do we ensure water security in spite of climate change? That is a common thread that runs through all our programs. The second is people's participation, because all these programs involve behavior change. So these are the two common threads that run through each and every one of these programs. Finally, I want to come to the program, the National Water Mission that I head, and the flagship program that we are implementing now, the Jal Shakti Abhiyan, Catch the Rain campaign. Now, the Jal Shakti Abhiyan, Catch the Rain campaign is a national call to action to try and conserve water and recharge our water sources. This is in 2019, the Prime Minister, he made the first call. And we tried it out in 256 water-stressed districts from July to November in 2 phases. There were 5 major interventions. There was water conservation and rainwater harvesting, renovation of traditional and other water bodies and tanks, reuse and recharge of bore wells, watershed development, and intensive afforestation. Now, all the states participated extremely enthusiastically in this program. And by the end, there were 2.73 lakh water conservation structures created, about 45,000 water bodies were renovated, and as reported, 12.36 crore trees were planted. Now, we were encouraged by this, and some states actually took it beyond the water stressed district. They took it to all the districts of the country, all these districts in their states. So the next year in 2020 was COVID year. So we couldn't do much that year. But on 22nd March 2021, again, the Prime Minister launched the next edition of Catch the Rain Jal Shakti Abhiyan, and we implemented it in all the rural blocks and all urban areas of all the districts in the country. Same period, similar interventions: water conservation, rainwater harvesting, enumerating, geotagging, and making an inventory of all water bodies, and preparing
of scientific plans for water conservation. We also tried to set up Jal Shakti Kendras in all districts and intensive afforestation and mobilizing everybody for the purpose. Again, the results were really exciting. The states reported that more than 46 lakh water-related works were completed. And also, because we were targeting water conservation, huge numbers of training programs, Kisan Melas, etc., about 340 Jal Shakti Kendras. But the achievement beyond numbers was that the states have now taken ownership of this program. So this year, again on 29th of March, the Honorable President of India has launched the Jal Shakti Abhiyan for the current year. Again, we are mobilizing all the states. We are going to all the districts. We are going to all cities. We are saying that all of us, before our festivals, whether it is Diwali, whether it is Eid, we house clean. The monsoons are a major festival for India. So let us prepare to catch the rain. Let us prepare our water bodies. Let us prepare our water courses. Let us try and prepare our water harvesting structures to at least store as much of the rain as we can, to take the benefit of the rain as much as we can. So let us spend 2 months preparing for the rains. This is the main purpose of the Catch the Rain campaign. And the spirit of it is that we want everybody, civil society organizations, Rotary, Lions Club, everybody to mobilize, to be part of this campaign, to work, because government cannot do it on their own. It is impossible to address the water security of such a large country on our own. This year, as a special focus, we are also looking at enumeration and better management of springs in hill areas. Because what we are seeing, and there's an NITI Aayog report, that a very large number of springs are disappearing. And these springs are not only water security for the villages that they serve, they also feed rivers. So they're important for the water security of the country. So this year, springs and spring sheds are a major area of focus, apart from geotagging and ensuring water bodies survive and are rejuvenated. Finally, it has also been mentioned, the Prime Minister has made a special call this year. This year being Azadi Ke Amrit Mahotsav, 75 years of India's independence, the Prime Minister has put out a call for creating 75 water bodies in every district of the country, as far as possible. If we can create new water bodies, wonderful. If not, rejuvenate. So therefore, create more water storage. So this is another area of focus also for this current year. Now, finally, what is my ask of this August gathering? Why am I here? I know Rotary does an enormous amount of work on WASH. I heard the amount of work that you're doing on water conservation. So my ask is maybe just threefold of you. One is mobilize as much as possible to help support the Jal Shakti Abhiyan this year and the years to follow. Because our objective is it becomes a people's movement and government can withdraw. The second thing is we are encouraging districts to create GIS-enabled water recharge and conservation plans, which actually maps out where best to create water recharge structures. So whenever you create your structures, please try and align with those plans if they exist. The third is that apart from creating of new structures, the other ask that I have is wherever in your institutions, in your buildings, wherever you're associated, where there are rainwater harvesting structures, please ensure that they are cleaned before the rains. We create new structures, but we don't look at the older structures. Once in Delhi Jal Board, we had a quick assessment of water harvesting structures in government buildings. And we found more than 50% of those structures were choked. So it is important to actually prepare for the rains by also reviewing your existing structures. Are they fit to receive the rains?
So I request all of you to mobilize as much as possible to support the water security of the country. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts and sharing with us the challenges and the various initiatives being launched by Government of India and the call to action from Rotarians. And we hereby commit that we will fully support all the initiatives of Government of India, including the catch the rain when it falls and where it falls. So we are fully committed, and Rotarians have taken a resolve that they will ensure that at least their households and their commercial or institutional premises will have a rainwater harvesting system in place. And not only that, the Rotary clubs are building check dams, transformation of water bodies, और आज हमारे बीच में रामवीर तनवर जी यहाँ पर हैं और उनके साथ मिलके भी हम बहुत काम करेंगे. And we will leave no stone unturned, ma'am, to ensure that the Rotary fully supports the Government of India flagship initiative of WASH. और 10% जो हमने commit किया है शेखर मेहता जी, उसमें हम खरे उतरेंगे. Thank you so much for taking time out and for your address. Thank you. Friends, now I would like to invite Mr. Pradeep Multani, the President of PHD Chamber of Commerce. He is also the Chairman of Multani Pharmaceuticals Limited and Managing Director of PG Industry Limited. Friends, you may be aware that PHD Chamber, along with its members, is extending its contribution to the public good through corporate social responsibility, as we call it, CSR initiatives, through PHD Rural Development Foundation as its social arm with various initiatives in the areas of healthcare, sanitation, education, skill development, and water harvesting. So friends, he will be speaking with us on role of corporate in nation building through water, sanitation, hygiene. Over to you, Pradeep ji. And after that, our District 3012 is going to sign MOU with PHD Chamber of Commerce. Over to you, Pradeep ji. Thank you, Ramesh ji. A very good evening to everyone. I welcome you all to our PhD chambers, and it is my privilege to be able to have the permission and be able to address such an august gathering. First, let me just mention about the background about PhD chambers. PhD chambers is a 117 years young organization. We have our own buildings. This is our own building. Then we have a building in Chandigarh, Lucknow, Jaipur, and all very, very impressive, owned by us, the chamber. We are there in 16 states and 5 union territories. We reach out to more than 150,000 direct members, direct and indirect, because there are so many associations who are members. And mainly we deal with small, medium, and large corporates. Assuming on an average, they have 50 members, even 50 staff. Then if you calculate that, we reach out to more than 3.75 crore of our Indian population. Now, what are the goals of the PhD chamber? As the president, what is expected? What are the goals and missions of the PhD chamber? As PDG Ramesh Aggarwal ji said, whatever is the national goal is our goal also. If Mr. Modi says we have to be a USD 5 trillion economy, we have to work towards achieving that goal. Because if we become a USD 5 trillion economy, then automatically we become number 3 economy in the world, a developed nation. And naturally, when we become developed, then all these things which we are working on, sanitation, education, doubling farmers' income, automatically comes in. So our thrust is also on doubling of farmers' income, because even in today's day and date, if we are having farmer suicide, it is unacceptable. And also, as it was mentioned, that 83% of the water is being used by agriculture. So they definitely need to be guided on how to double the farmer's income and reduce water consumption. Then, of course, Swachh Bharat, we are all committed towards that. Water, sanitation, hygiene, all these are totally focused areas, because if these are under control, our GDP also goes up, because
log kam bimar honge, their productivity increases. So that is also one of the major thrust areas. Apart from that, since we are a business chamber, we have to provide service to our members. We know Indians are born intelligent, sensible, hardworking people. All we need, all the Indian industry needs is ease of doing business. Ease of doing business means कि भैया जो industry चलाता है उसको 30 से 35 department होते हैं, and we know it's really difficult to run industry. So we are totally focused in talking to the central government, state governments, कि please हमें काम करने दो, single window service, and how we can make life easier for us, so that जो original goal है 5 trillion economy वहां पहुंच सकें, सिर्फ अलग-अलग departments का deal हमें ना करना पड़े. So we thrust on ease of doing business. And of course, like Rotary is a wonderful social organization, we are also Indian nationals, and it is our duty also to do social work. So we have got two foundations, PhD Rural Development Foundation and PhD Family Welfare Foundation. We have been associated with Rotary for now more than a decade. And I will say we are very, very efficient in executing all these sort of social projects. We have worked on water harvesting, education, our dental buses are going around. We are doing a lot of good work. And of course, it has been an honor and privilege to work with Rotary, because we know it's a win-win for both of us, and we both are committed, to serve the underprivileged. Well, all I'll say is it is an honor and privilege. I'm very thankful to Anup Mittal ji that before I could tell him, let us sign an MOU, because our aims are the same. It's matchmaking. We are all committed to nation building, and like I said, also to develop our own members and all. So Anup, before I could give a proposal to him, he gave the proposal to me. So I wish I had asked for something more. And then of course, Ramesh Aggarwal ji is a very good friend. I'm very thankful to him that he is also enabling us to get into an MOU with the RI District 3012. It will be an honor to sign an MOU with Ramesh Aggarwal ji, with Ashok Aggarwal ji. And let me just say one thing, we are committed, because being an ex-Rotarian, I was a past former president of Rotary Club Delhi Midtown. Unfortunately, the club split into two. So I was asked, is side aa jao, us side aa jao. That I agree with you, because I love Rotary. I think it's a fantastic organization, and it is an ordinary privilege to get together and do something concrete for our joint nation building and for our good health also. Thank you very much. Thank you so much. And let us go for the
So now both the district 3011 and 3012. Yeah. Thank you so much. हाँ ना, please आइए ना. Let me, since I am, जब PhD में खड़े होते हैं तो ये तो अनुरोध जरूर करेंगे. All of you who are in business or in industry or professionals become PhD members. And why I say so is कि आज के दिन में जो मैंने आपको बोला ease of doing business के लिए हमारी कोई बुकलेट अगर अभी होंगी तो I'll share some of those with some of you also. Yeah, of course, I'm coming to that also. Of course, it's a both way. Please join PhD, and I'm urging all our PhD members to become Rotarians also, because like I said, it is a total wonderful matchmaking. All our objects are the same. We are strongly advocating to our members to join. Actually, let me tell you, many of our former presidents are already Rotarians. Yeah. I'm the current president of the PhD. अभी थोड़ा गैप हो गया, but let's see, because आज के दिन में थोड़ी टोपियां बहुत ज्यादा पहनी हुई हैं, so you should be only there when you can do justice. Let me also say I'm the president of the Indian Ayurveda Association, so we control around 80% of the Indian Ayush industry. So जिम्मेवारी वो लो जिसको पूरा कर पाओ. तो Rotary में भी commitment बहुत होती है, because I went through that when I was the president of our Rotary Club Delhi midterm. So like I said, I thank all of you for this wonderful opportunity to be able to talk to my fellow brothers. Let's all work together to make India strong and ourselves strong also. Thank you. I can I say 2 minutes? I endorse. मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ PhD. Thank you much, sir. I endorse what Pradeep ji has said. After MOU, we have a lot of exchange of membership, and whoever Rotarians have become a PhD member, very appreciating, and they always thank us कि भाई आपने अच्छा, you know. So I think it's a very good organization, PhD, to be joined, and a lot of activities are business exchange and so many things. You are already in 160 countries, I suppose. Yeah. Partnership with 160 countries. I'm endorsing, sir. Yes, PhD. Everybody Rotarian should join the PhD. Thank you. Thank you. Thank you to everyone. Great. अच्छा, group photo. Okay. I think Pradeep ji has to leave. He has got another meeting. So we look forward to working closely. और ऐसे मैं भी PhD का member हूँ और इसीलिए मैं चाहता था कि MOU जरूर sign होना चाहिए और this is going to help us in our mutual membership growth of each organization, Rotary as well as PhD. And certainly, and to begin with, Pradeep ji, very soon we are going to sign a MOU for a WASH project involving rejuvenation of a water body in Jalalabad, Noida, and construction of two check dams. So there was a scarcity of time today, और बहुत जल्दी हम वो MOU sign करेंगे. मेरी क्लब ही करने वाली है. The project is worth 50 lakhs of rupees. So thank you so much taking time out. Thank you. दोस्तों, अब समय आ गया है हम रामवीर तंवर जी को सुने और ये हमारे गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं. ही इज पॉपुलरली नोन एज PondMan. ही इज आल्सो अ TEDx स्पीकर और उन्होंने अपने छात्र जीवन के दौरान जल संरक्षण के बारे में काफी कुछ किया है. बड़े भावुक रहे हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पानी के कंजर्वेशन के लिए और तालाबों और झीलों के लिए को बचाने के लिए जल चौपाल नाम से अपना अभियान चालू किया. इन्होंने इनकी से अर्थ NGO ये चला रहे हैं, अभी इसके फाउंडर मेंबर हैं. और मन की बात में दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी प्रशंसा की कि जिस तरह का काम
ये वॉश एरिया फोकस में कर रहे हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल सेना का जो गठन योगी जी ने किया है, इनके ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तंवर जी ने पूरे भारतवर्ष में 40 से ज्यादा तालाबों और झीलों को रेनोवेट किया है, ट्रांसफॉर्म किया है या कायाकल्प किया है, और इस संदर्भ में वो विभिन्न कॉरपोरेट ग्रुप्स और सरकारी विभागों के साथ मिलके सलाहकार के रूप में काम भी करते हैं। और मैं अब निवेदन करना चाहूँगा रामवीर जी को, वो बताएं कि क्यों जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर बॉडीज और वाटर कंजर्वेशन, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड द काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग। ओवर टू यू रामवीर जी। Sir, thank you so much for such beautiful introduction, and also thank you Rotary Club for giving me this golden opportunity. मुझे लग रहा है कि मैं सबसे यंग मेंबर हूँ आज यहाँ पे अपने सामने बैठे हुए महानुभावों के सामने। तो जैसा सर ने बताया, मेरा नाम रामवीर तंवर है, और अगर टाइम हो तो हम एक वीडियो भी प्ले कर सकते हैं अगर टाइम अलाउड करता है, या फिर एक पीपीटी भी है जिसके मैं समझा सकता हूँ कि क्यों ये काम करना पड़ रहा है। पीपीटी, अगर आप पीपीटी चला सके तो प्लीज। एक से अर्थ नाम, रामवीर नाम से एक पीपीटी है वहां पे। तो जब तक पीपीटी चल रही है मैं बता रहा हूँ, मैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने ये एक छोटी एक्टिविटी शुरू की थी जल चौपाल की। उस टाइम पे मैं एक ट्यूशन देता था अपने गांव में। तो डिस्कशन उस दिन का अकस्मात यही था कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो ईवीएस हो, एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो, वो साइन थीटा कॉस थीटा की तरह सिर्फ मार्क्स लाने के लिए होती है, या घर सच में उसमें ग्राउंड पे हम कुछ चेंज करते हैं या घर पे कुछ समझ सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट कहा कि हम भी शायद यही करेंगे। आज हमने टॉपिक पढ़ लिया और सुन लिया, अच्छी अच्छी बातें कर ली, कल से हम भी भूल जाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, हम कुछ आज करेंगे। तो हमने जो हमारे बस की था, पोस्टर बनाना, उस पर अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिख के दीवारों पे चिपकाना, ये वाटर बॉडीज के बारे में वाटर वो किया। लेकिन फिर ये इंटरेस्ट जगा कुछ साल में, ये एक जल चौपाल का इसने रूप लिया जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और ये सारे लोग इसका पार्ट बने। उसके बाद ये वॉलंटियरिंग एक्टिविटी, और फिर सीधे पॉन्ड रिस्टोरेशन पे पहुंचते पहुंचते अभी हम ऑल इंडिया में, ये गौतम बुद्ध मेरे गांव से शुरू हुआ था, लेकिन अभी हरियाणा, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, सब जगह पे हम पॉन्ड रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए एज ए एक्सपर्ट और के तौर पे काम कर रहा हूँ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट और कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ। बाकी मैंने कभी पीएचडी तो नहीं की, लेकिन पीएचडी में चैम्बर में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। और लेकिन बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स मेरे पास हर साल इंटर्नशिप के लिए या थीसिस लिखवाने के लिए आते हैं। हालांकि मैं पहला ऐसा सदस्य हूं जिसने अपने परिवार में 10th पास की है, लेकिन मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आप जैसे महानुभाव लोगों के सामने यहाँ पे बोल पा रहा हूँ और खड़े हो पा रहा हूँ। तो मैं, अगर पीपीटी नहीं चल पा रही है तो यू कैन प्ले स्मॉल वीडियो। तो अभी अब चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो या फिर डिपार्टमेंट हो, तो हम ज्यादातर बहुत सुंदर सुंदर वाटर बॉडीज की पिक्चर्स दिखाकर दिल जीत लेते हैं। लेकिन आप सच में गांव में जाइए, आप किसी भी अर्बन एरिया में गांव में जाइए, तो आपको वाटर बॉडी किसी डंपिंग यार्ड से ज्यादा नहीं दिखाई देंगी। तो यही मेरा इशू था कि हम सच पे उस टॉपिक पे हम ना बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें सुंदर वाटर बॉडीज को दिखाना होता है या फिर उन्हीं को रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन वाटर अभी भी आप किसी भी बच्चे से बोलिए स्कूल में कि एक सीनरी बनाइए, नेचुरल सीनरी बनाइए, तो वो क्या करेंगे? एक उगता हुआ पहाड़ के पीछे से सूरज, आगे एक छोटा सा तालाब, झोपड़ी, कमल के फूल खिले हुए, वही ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक सीनरी आती है। लेकिन आप सच में जाइए तो गाँव में बिल्कुल भी वैसा नहीं है ना। मैंने एक कैंपेन चलाया था 2018 में, सेल्फी विद पॉन्ड। मोदी जी
से प्रेरणा लेके, उनका एक सेल्फी विद डॉटर एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। तो उन्होंने कि आप अपने गांव में, आप जिस भी गांव से संबंध रखते हैं तो आप उसमें जाइए और अपने वाटर बॉडी, जो भी गांव का तालाब था उसमें जाके देखिए तो सही उसकी क्या हालत है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी फीडबैक आया कि हम आपके कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए 10 साल बाद गुड़गांव से मध्य प्रदेश गए थे उसको सपोर्ट करने के लिए। तो जिस तालाब में गांव के कुंड में हम नहाए हैं वो वहां पे था ही नहीं। यानी ये एक सच में एक गवर्नमेंट का भी डेटा है कि हम आजादी के टाइम पे लगभग देश में 25 लाख हिस्टोरिकल वाटर बॉडीज थी, जिसमें से 2017 में सिर्फ 5 लाख बची। तो 25 में से हम 20 लाख हिस्टोरिकल वाटर बॉडीज को अब तक खो चुके हैं, और इन पे ज्यादातर पे एंक्रोचमेंट बन गया, या वहां पे वाटर बॉडी की जगह सिर्फ छोटे छोटे डंपिंग यार्ड्स हैं। वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी जो पीछे गैप रहा है, वो बहुत सारी चीजें रहा है। तो मेरा काम है उन डंपिंग यार्ड्स को फिर से वाटर बॉडी बनाना, तो वही मेरा काम है और वही मैं कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वीडियो प्ले कर दीजिए तो हम उससे भी थोड़ा सा समझ पाएंगे शुरू से। आप शुरू से इसको, हाँ हाँ, आवाज और कर दीजिए प्लीज। अब है तालाब सीवेज टैंक, जिसमें जितना भी सीवेज निकलेगा वो सीधा जाएगा। दूसरा, गांव में जल्दबाजी में लोगों ने कई बार सेप्टिक चैम्बर भी दिया, उन्होंने अपना सीधा शौचालय से पाइप निकलता है नाली में, नाली जाती है सीधा तालाब में। तो जो भी ह्यूमन वेस्ट है वो डायरेक्ट तालाब में। मेरा एक्चुअली प्रयास है कि जो तालाब मर गए हैं या अब वो तालाब जैसे नहीं दिखते, तालाब जैसे दिखाऊं, और जो जिस उद्देश्य से तालाब बनाए गए थे वो उद्देश्य पूरा करें तालाब। Growing up in a village in Greater Noida, ponds played an intrinsic part of Ramveer Tanwar's childhood. But over the years, as concrete jungles exploded into life, and ponds and lakes turned themselves into dumping grounds, that inherent connect to the neighborhood water body was slowly lost. जब मुझे नजर आए वो तालाब जिनके किनारे पर बचपन में खेले, जिसमें हमने लोगों को नहाते हुए देखा, और अभी वो बिल्कुल डंपिंग यार्ड जैसे लगता है। उसमें अगर आप डर लगता है कि अगर पानी में हाथ भी लगा दे तो हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। ऐसे तालाबों को देख के लगा कि यार 10 साल में इतना चीजें बदल गई, जैसे बच्चों को नहाते हुए देखा है और वो वहां पर खबरें आती हैं कि कोई जंगल में बच्चे बच्चा है। तो मुझे लगा कि यार हमने चीजें देखी हैं लेकिन, और हम नहीं देख पा रहे, और अगली पीढ़ी को देखना भूल ही जाएगी। After a few years of struggling a full-time position in a multinational company and the decision to raise awareness in water crisis, in 2018, Ramveer quit his corporate job to dedicate himself wholly to his mission of reviving village ponds. Since 2014, he, along with a team of 11 members, has restored more than 40 ponds across Delhi, Haryana, UP, and Punjab through public engagement, government support, and CSR funds. The team has also taken to social media through an innovative concept of selfies with ponds to get the youth on board. एक्चुअली सेल्फी पॉइंट को शुरू करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हमें तालाबों की लोकेशन और स्थिति पता चले कि तालाब कहाँ पे है और कैसे स्थिति है, क्योंकि आजकल हमारे ज्यादातर युवा सोशल मीडिया पे है और वो सेल्फी देखना जब कम लेती है, तो फिर मैं एक सेल्फी तालाब के पास में नहीं जाए, और जब उसमें ऐसे सेल्फी के साथ अपलोड करते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है। About that process.
तो क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है, तो अगर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कहीं पे भी मेरी जरूरत पड़ती है किसी वाटर बॉडी को रिवाइव करने के लिए, और पूरा काम क्योंकि CSR की सपोर्ट से हो रहा है, जिसमें एयरबस है, ओबरॉय होटल्स है, HCL है, JK सीमेंट है, CII है, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें CSR का भी सपोर्ट है इसमें। तो आई एम जस्ट द फेस, और मैं सिर्फ ग्राउंड पे मेहनत करने वाला हूं, बट उसके पीछे बहुत बड़ी टीम है आप जैसे लोगों की, रोटरी क्लब जैसे कि। तो और मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं रोटरी क्लब के साथ जुड़कर कुछ ग्राउंड पे चेंज कर पाऊं तो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ramveer ji, for sharing your story and for your assurance that you are going to fully support us. और अभी रामवीर जी, हम जो जलालाबाद में एक वाटर बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं PhD के साथ, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी हमारी, तो उसमें भी हम चाहेंगे कि क्योंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, तो जो भी सपोर्ट, असिस्टेंस, गाइडेंस आप दे पाएं। और आगे सर्टनली इतने रोटेरियंस यहाँ बैठे हैं, और हम लोग आप लोगों के साथ मिलके काम करेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है CSR फंडिंग की। हमारा ग्लोबल ग्रांट का भी अपना मॉडल है, तो द फंडिंग विल नॉट बी एन इशू। थैंक यू सो मच फॉर taking time out and coming for this seminar. Thank you so much. Friends, now I would like to invite Manish Wasuja from UNICEF. He is WAS specialist, and he is going to speak to us on community management of WAS services. Over to you, Manish. A very good afternoon to everyone. All the eminent Rotarians on the dais, of the dais, and friends. Presentation chala denge. So basically what I am going to cover today is in the flagship programs of Jal Jeevan Mission, Swachh Bharat Mission, and also for WASH in schools, how we can work together and what is the objective, overall objective of these programs. So the topic of the presentation is basically on community management part, but it is building partnership through the such kind of partnerships in which Rotarians are also kind of contributing, and there are other partners also. So next please. We work with the Government of India and also state governments, UNICEF, in different programs. So water, sanitation and hygiene is one program. Next please. Okay. Yeah. So I will first talk about Jal Jeevan Mission. Now the objective of Jal Jeevan Mission is that by 2024, every household, at least in rural areas, have access to functional household tap connection. So drinking water through tap connection. That is the overall goal of Jal Jeevan Mission. If I talk about, if I give you some kind of data, वाटर सप्लाई, और ये मेरे से पहले रमेश जी ने भी बताया था कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज से कितना हम बीमारियों को रोक सकते हैं, नॉट जस्ट मोर्टेलिटी बट ऑल्सो मॉर्बिडिटी, दैट इज द सफरिंग विच नॉर्मली इट हैपन्स. सो जल जनित बीमारियों से हम करीबन जो 80% जो सफरिंग्स हैं उनको रोक सकते हैं अगर जल जनित बीमारियों को हम कंट्रोल करें. और ये साफ पानी पीने से, आसपास सफाई रखने से, शौचालय के उपयोग से इन चीजों पर हम ध्यान रख सकते हैं. ये सिर्फ पानी की व्यवस्था के लिए घर के अंदर ये सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं करता, बट इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डिग्निटी, इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू ईज ऑफ लिविंग, इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू improved girl child enrollment and attendance in the school. It also contributes to health and overall well-being and economic conditions of family. So with those kind of outcomes, if we talk about what was the baseline when Jal Jeevan Mission started, we were at 18%, almost 17 point something% of rural household had tap water connection. But right now, today, when I speak to you, it is 49% rural household have tap water connection. So this is the achievement of Jal Jeevan Mission, and I'm happy to note that Rotarians are
already kind of contributing to this mission. The only thing now and by 2024, God willing, we should be able to achieve that universal coverage. But then there are some issues which we need to kind of focus. Though Jal Jeevan Mission is a bottom-up kind of approach, but sustainability remains a bigger challenge. चीजों को बनाना बहुत आसान है, बट उसको मेंटेन करना थोड़ा सा, उसमें हमें बिहेवियर चेंज, कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है. एंड यू ऑल आर मच एक्सपीरियंस्ड इन दिस. यू नो, किसी भी चीज को ऑपरेट मेंटेन करना, वो भी एक ऐसी चीज जो पब्लिक गुड के लिए है. थोड़ा सा उसमें लोकल, उसमें फ्लेवर, उसमें ओनरशिप डालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. It's not a public supply or public water supply. It is my own water supply in my village. If I can maintain that way, with that kind of thinking, I think Jal Jeevan Mission can be sustainable. And sustainability, not only in terms of sustainability or functioning of the system, but also functioning of the source. The failure of source is a major problem in drinking water supply program. So that we have to make sure that how we can sustain it through check dams, जो अभी पहले बताया गया था. Also through wisely utilizing water. पानी ऐसे बहता ना जाए. जब हर घर में पानी होगा और हर एक को जब बाहर से लाने की एक आदत थी, तो फिर वो उसको वैल्यू करते थे. अब हर घर में जब पानी होगा, तो वो बिहेवियर चेंज लाना कि पानी को वेस्ट ना किया जाए, that contributes to water conservation. So those are the behavior change, and for that our Prime Minister always says that it has to be a Jan Andolan. You cannot have a water supply program with 100% water coverage where you don't involve people, because then it will not be sustainable. So these are some of the figures which I am sharing with you. I will not take much time, but this shows like state-wise coverage in different states. And this is purely for Jal Jeevan Mission in rural areas. Financially, program is well funded, has the highest support of highest political level in India. So $70 billion project, not only in capital investment, but also in operation maintenance. 15 Finance Commission, 60% of 15 Finance Commission funds are earmarked for water and sanitation. So गांव में अगर पैसा नहीं है किसी चीज को मेंटेन करने के लिए, एटलीस्ट वाटर सप्लाई को, तो वो 15वीं वित्त कमीशन का पैसा यूज कर सकते हैं. So issues are not around funding or issues are not around technology. Issues are around behavior change, making it a social mobilization program. So इसीलिए इसमें बॉटम अप अप्रोच ली गई है. हर गांव में विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी का गठन होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है. सो उसमें मेरा ये एक सुझाव रहेगा कि जब आप इन चीजों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, यू ऑल्सो सपोर्ट दैट सस्टेनेबल बिहेवियर चेंज, दैट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एस्पेक्ट. So that will actually change and sustain these services. Then primarily इसमें women का participation is most important, because in India water is primarily in rural area is a kind of aspect which affects women. So उनका involvement अगर village water sanitation committee में हो, they become the managers of those water supply schemes, then those leadership qualities can also be groomed. I'll also briefly touch upon SBM part 2, like Swachh Bharat Mission part 2, जिसमें ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है. पहले फेज में ज्यादा फोकस टॉयलेट कवरेज पर था, अब ज्यादा फोकस सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए उस पर है. और उसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में ODF प्लस विलेज की एक नई डेफिनेशन है कि गांव के अंदर से कचरा बाहर ना निकले. जैसे अभी रामवीर जी ने दिखाया कि पॉन्ड्स में सॉलिड लिक्विड वेस्ट हीट जा रहा है नॉर्मली. सो उसको कैसे एक ट्रीटमेंट यूनिट, इन सिटू ट्रीटमेंट यूनिट बनाया जाए. जैसे हमारे शौचालय है, गड्ढे वाला शौचालय, जिसमें जिस पर ये स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 1 जो चला, वो इटसेल्फ एक इन सिटू ट्रीटमेंट यूनिट है, एक ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें कि जो शौच और मल जो अंदर जाता है, वो 1-2 साल बाद या 5 साल बाद जब आप उसको पूरी तरह यूज कर लेते हैं, भर जाता है, और आप उसको बंद कर दें और दूसरा गड्ढा यूज करें,
तो वो 1 साल बाद या 9 महीने बाद वो पहले गड्ढे वाला जो भरा हुआ पूरा मटेरियल है वो वर्मी कंपोस्ट, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। सो वो एक ट्रीटमेंट यूनिट है। इसी तरह से क्यों ना हम गांव के अंदर इस तरह की सुविधाएं करें, फैसिलिटीज बनाएं which become like zero discharge, which become like non-polluting without any solid and liquid waste which gets accumulated here and there. So इस तरह का ये ODF plus model में different kind of milestones are there, how we can convert a fully saturated toilet with toilet village to a fully saturated and clean village with respect to solid and liquid waste management. ना केवल सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बट उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किस तरह से जोड़ा जा सकता है ताकि वो पानी के भी पर्सपेक्टिव से सस्टेनेबल बने। सो ताकि एक जो गांव है उसमें केवल पानी का अलग प्रोग्राम, शौचालय का अलग प्रोग्राम या स्वच्छता का अलग प्रोग्राम ऐसा नहीं हो, बल्कि वो एक आदर्श गांव बने जिसमें सभी प्रोग्राम्स इकट्ठे मिलकर काम करें। एंड इसके लिए एक और जो जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूं क्योंकि शुरू में वो ज्यादा बात हो रही थी, वॉश इन स्कूल्स। स्कूल्स, चिल्ड्रन आर द बेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ एनी मैसेज। शायद हम लोगों को जिनके बाल सफेद हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट, बट बिहेवियर चेंज थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों में, मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं कि पापा ऐसे नहीं करते, यहाँ पर इधर उधर कचरा नहीं फेंकते। सो दोज काइंड ऑफ एम्बेसडर्स, because it is difficult for us to reach every household in rural area, but if we target schools for that behavior change in terms of वहां पर साफ पानी हो तो वो अपने घर में भी साफ पानी की डिमांड करेंगे। और पेरेंट्स को जब कोई बच्चा डिमांड करेगा then I don't think we have much options to say no. So वो उस तरह का किस तरह से बच्चों पर फोकस करना थ्रू स्कूल के माध्यम से, थ्रू आंगनवाड़ी के माध्यम से, ये एक जर्नी है जो इंडिया में किस तरह से वॉश इन स्कूल का प्रोग्राम चला और रोटरी इसमें बहुत बड़ा उसमें पार्ट प्ले किया। आई थिंक दैट वी कैन कंटिन्यू एंड इम्प्रूव अपॉन। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड माय टाइम एंड वी आर रनिंग लेट आई थिंक। सो विद दोज वर्ड्स आई वुड लाइक टू क्लोज माय प्रेजेंटेशन। If you have any query, I am available. We can discuss during the break also. Thank you. Thank you so much, Manish ji, in briefing us about the Jal Jeevan Mission, wash in schools, ODF plus villages, and the Rotaries. You know that we are already engaged in all such kind of activities, and we look forward to your continued support. Friends, I would like to share with you that the Rotary India has also signed a MOU with UNICEF India. So UNICEF India happens to be our technical partner. Not only that, at the global level, the Rotary International has a MOU with UNICEF. So हम लोग वहां पर भी मिलके काम करते हैं और यहाँ पर भी मिलके काम करते हैं। जो वॉश इन स्कूल्स का टारगेट चैलेंज इनिशिएटिव था उसमें हमारे कंसल्टेंट यूनिसेफ थी। And whenever I used to have meeting there abroad in Houston, Evanston, see, there used to be someone from UNICEF coming and guiding us. Thank you. Thank you so much. Friends, now we would like to listen to our incoming district governor from 3110, Pawan Agarwal ji, who is also a managing director of Naini Papers Limited. All the way he has come from Rudrapur, and he is going to share with us his experience, you know, as a CSR partner with Rotary. Over to you, Pawan ji. Thank you so much, Ramesh Aggarwal ji, past governor. I would say my mentor in Rotary, if I can use that phrase for Ramesh ji. Thank you so much, Ramesh ji. Friends, this is really not the right time, you know, at this point of time in the program when we are supposed to wind up. So we have another 2 or 3 itinerary items left. Good evening, friends. I won't really take much of a time. Corporate social responsibility is not new to Rotary right now, though it was in 2015 when this pilot project was taken up by Rotary. And Rotary thought that let us tap this special fund of CSR in India. This was very specific to India. And friends, in 2015-16, our district, fortunately 3110, was the first district who undertook this very first project of CSR under WASH.
and that was taken over by my company, Naini Papers Limited, at that point of time. And I donned two hats, you know, one of the corporate and other of the Rotary. So I could really understand the synergy that Rotary brings in for such kind of projects. And friends, out of the 5 projects, 3 were done by our own district under CSR. Now, as I was talking to Anup ji, Ashok ji, and I know, so I mean, all the districts, all the Rotarians are very aware of the corporates' funds available to them. But what is the thinking of corporates? We have to really give a thought to the mindset of the corporates. And friends, believe me, there is enough money available for any of your projects. Leave aside WASH. Any of the projects, you think of a project, you think any magnitude of the project, be it $30,000 global grant project or be it 500,000 global grant project, doesn't matter. Funds are available. The only thing that matters is your approach. Now coming to the specific points, what corporate needs. Foremost, corporate needs sustainability of the project. Have you really worked out the need assessment in your society? You are coming up with a blood bank. You are coming up with 200 check dams. But do you really need 200 check dams in that vicinity, in that area? Or you are overdoing it? So need assessment is very important. So from corporate point of view, when we joined hands with Rotary and we did a need assessment, we found that all the schools in our area were deficient in basic amenities. They were not having drinking water facility. What to say of safe drinking water? They were not having even a single tap of water over there. That was the problem. And then, you know, hygienic conditions were not hygienic at all. There were no toilets at all. So no girls were studying over there. So when we joined hands with Rotary, we found a suitable partner in Rotary, a reliable partner in Rotary. And as a Rotarian, I knew the kind of internal processes and systems which Rotary Foundation India has. So friends, from day one, we were sure that our money would be well spent. Every penny would be well spent. So that is what corporate wants. Then coming to the sustainability part, we thought that, okay, personally, we went to many schools before that, and whatever toilets we had built, they were mostly locked. Principal was saying that Pawan ji, isko isliye band kar rakha hai ki isko agar khol diya to ye kharab ho jayenge. I mean, can you believe that? But it was the truth. It was the reality. Kyunki jab wo kharab ho jayenge toilets, so how to clean them? Who will clean them? Teachers and staff are not meant to clean them. Students are not meant to clean them. Then who to clean them? Safai Karamchari. They were not there. So the biggest challenge for Naini as a corporate in implementing this project was how to make it sustainable. And friends, we devised a novel idea. हमने सफाई कर्मचारियों को पकड़ा और उनके हमने बैंक अकाउंट खुलवा दिए. And we negotiated with them. And Ramesh sir, उन्हीं के स्कूल के कर्मचारी थे वो जो वहां काम करते थे. प्रधान को भी हमने साथ में लिया. And we fixed an amount for each and every safai karamchari in each and every school. And since then, we have been paying them right from 700 rupees a month to 1200 rupees a month, depending upon the area and location. And our team, the CSR team, we have made a team of the Rotary Club. It visits there not so frequently now, maybe twice in a year, and just sees and just inspects that register which is being maintained by the principal of the school. And to my utter surprise, today whenever I visit a school, my toilets are functional, because these are being taken care of by those safai karamcharis. So friends, it is very important that we should not just build up a project, we should make it sustainable. If you can ensure two things, if you have done properly the need assessment, number one, and number two, if you have taken care of the sustainability of the project, then believe me, CSR fund is not an issue. Corporates are there to invest, to spend, and we should just devise the right kind of a strategy to implement the whole project. I can just only say, with my own experience, a couple of weeks back, in fact, on 20th of April, we had a CSR symposium in Rudrapur. And friends, 35 corporates were there. And we were discussing about each and every area of focus of Rotary, 7 areas of focus. We made 3 presentations to them. And they said that, at the end, we were listening to them.
We invited 4 or 5 corporates to give their views to us. And friends, we signed 5 MOUs over there. We were not prepared for that. But they were so very interested, so very, impressed with Rotary's overall system. We are the only organization which has got charity navigators 4-star rating 13th year in a row, perhaps now. So we have got our own credentials, and corporates know about it. So friends, I can only say in the end, I remember हम लोग NCR से हैं, और अशोक चक्रधर साहब की कुछ लाइनें रमेश जी जो मैं बड़ा मुझे याद रहती हूँ, मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा, जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, ना रेशम सही तेरा रेशा रहेगा, अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा. So friends, with these, I think, we can really work out a right workable plan, and corporates are there to fund. Now it is up to us Rotarians to really come forward, devise a strategy, and really implement it. And whatever targets are there, 10% of the government schemes, I think, easily achievable. So in the end, Ramesh sir, thank you so much for inviting me and, giving this opportunity to speak my mind to all the distinguished gathering over here. And our chief guest, Tanwar साहब, आपने जो अच्छा काम आप कर रहे हैं, definitely हम जब रोटरी आपके साथ मिलेगा तो आपको वाकई लगेगा ग्राउंड पे हम एक अच्छा काम कर रहे हैं. Thank you so much, friends. Thank you. Thank you so much, DG Pawan Agarwal, for sharing your thoughts. And you are 100% right that what is the key? The first thing that is most important is the need assessment. हम रोटरी में क्या करते हैं, पहले प्रोजेक्ट को वो कर लेते हैं और उसके बाद नीड असेसमेंट करने जाते हैं. हमको ये अप्रोच को रिवर्स करना है. पहले नीड असेसमेंट कीजिए एंड देन द अदर क्राइटेरिया इज द सस्टेनेबिलिटी, जिस पर बहुत ज्यादा, बिकॉज नाउ द ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट कैन नॉट बी सैंक्शनड if you are not able to convince the Rotary Foundation that your project is going to be sustainable. So these are the two key components we got to focus on, and he's absolutely right. There is no dearth of funding for the corporates. The only problem is writing global grants, writing CSR grants, then can be a problem, but पैसे की कोई problem नहीं है. अगर commitment होगी तो सारी चीजें हम achieve कर पाएंगे. दोस्तों, मैं अब invite करना चाहता हूँ both the governors, Anup Mittal 3011 and Ashok Aggarwal from 3012, in case you would like to announce the recognitions, because Ashok ji had mentioned in the beginning. आपका भी कुछ है कि पहले इनका? Okay. 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 Please, I think I think we should recognize them. आप आए ना यहाँ पर एक फोटो है, क्योंकि $15,000 आपने रोटरी फाउंडेशन को दिए हैं. 30,000. So it's a directed gift. Oh, very good. अरे धिंगरा जी has been so committed. I know सुशील जी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो motivation and inspiration has always been there. So great. उनके नाम से उन्होंने बनाया था सुशील डैम. हाँ. तो मैंने उस वक्त सोचा था, जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा जब वो बना सकते तो why can't I? Certainly. Thank you so much. और एक बात और मैं बताऊं अपने, कि जो चीजें बड़ी मुश्किल से लगती हैं, I've always made it very easier. पहले PHF नहीं बनते थे. मैंने कहा ये लो, मैं PHF क्या, मैं डोनर बन जाता, मेजर डोनर बन जाता हूँ और डबल बन जाता हूँ. तो I'm just motivating others. It is so easy. आप आगे तो बढ़ो. बताइए प्लीज. हाँ, वो बन जाएंगे. वेरी गुड. ये अपने ग्रांट इवेंट को लेके ऑलरेडी फाउंडेशन स्टोर रख के आ चुके हैं. डैम बन जाएगा जब डैम होगी कंप्लीट. आओ जी, सभी आ जाओ. हाँ. This is the way, this is the case study I mean. Thank you. Go ahead. Thank you very much. Thank you.
थैंक यू। वास्तव में मेरे को लगता है कि भाई हम अगर कभी मांगने जाते हैं, हम एक्चुअली में क्या है, बोलते ही नहीं है। शायद अगर हम बोलें तो बहुत शायद लोग आगे आते हैं जो ये काम करने के लिए तैयार है। और जो पवन जी आपने कहा ना, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होती। मतलब ये एक सरप्राइज है मेरे लिए भी कि भाई 8 या 10 दिन पहले रमेश जी ने कहा और मैंने कहा चलो ठीक है, पुल एंडोमेंट फंड कर देते हैं क्रिएट। और ये देखिएगा कि भाई 8 या 10 दिन में $30,000 और आ चुके, जो कि 30,300 समथिंग है। मैं बुलाना चाहूंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग आए हैं उनमें से, लेकिन मैं नाम सबका जरूर लूंगा। और JS धनखड़ धनकौर से, गन्नौर से, GP अग्रवाल जो आए हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया इधर आ जाएं। डॉक्टर राजीव गोयल, गौतम झावेरी, आइए ना डॉक्टर साहब। अनिल कुमार गुप्ता, गाजियाबाद अनंत। पंकज जैन, गाजियाबाद आइडियल। मनिंदर बत्रा, गाजियाबाद आइडियल। राजीव गुप्ता, दिल्ली मयूर विहार। आइए प्लीज इधर आइए, यही बैठी। दयानंद शर्मा, दिल्ली ईस्ट एंड। संजय जैन, गन्नौर। अरुण अग्रवाल, गाजियाबाद साहिबाबाद। अरुण जी, मेरे ख्याल से अरुण जी को वास्तव में बिठाना बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। कैसे आप भाभी जी, आप ही आ जाइएगा अरुण जी की जगह। निर्मल सिंह जी आए नहीं, साहिबाबाद से। रोहित अग्रवाल, गाजियाबाद आइडियल। प्रशांत सिंगल, गाजियाबाद एलीट। अलका अग्रवाल, गाजियाबाद नॉर्थ। और VK बंसल, दिल्ली अपटाउन। बंसल साहब आप भी आ जाइएगा, आप आगे आ जाइएगा। और अश्वनी जी आप भी साथ में आ जाइएगा, और आप सब आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा। ये पूल एंडोमेंट फंड है जो साइन बाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। एक अश्वनी जी आप भी आ जाइएगा, क्योंकि देना तो आप ही को है। आइए अश्वनी जी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। इन लोगों की स्पेशल भी तो होता है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही है। दीपक गुप्ता जी आइए। Big round of applause for all the congratulations to the District Governor. Congratulations because you work at and definitely to the Rotary Foundation. लेकिन दीपक जी आप क्या कर सकते हो, अगले साल आपके गवर्नमेंट को बन गया है, इसमें लोग पैसा ऐड कर रहे हैं। तो we are trying to do all group and local. And one more, जैसा कि मैंने उस दिन जब रमेश जी ने कहा तो मैंने इनको कहा कि भाई आप क्या दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं भी $30,000 ये टर्म गिफ्ट में देता हूँ वॉश के लिए। तो थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच। Ramesh Aggarwal ji, every year, I don't know, in the last 5 years I have seen any time giving less than $30,000 to $40,000
So friends, we are towards the end of the program. In case anybody has any question, any comment to make, most welcome. And we also have some visiting Rotarians from other parts of India. And in case they would like to, because we would like to recognize them. तो मैंने देखा था कुछ चेन्नई से कोई थे यहाँ पर 3141 से अनूप जी आप बता रहे थे. हाँ, अर्चना शर्मा जी है 3141. Yeah. They are building up 500 bedded cancer hospital. Oh, very good. She's on this Congratulations. one. कौन सी club से? Which club do you belong to? अच्छा, Bombay based. Very good. There was someone from Calcutta also. हाँ है. अच्छा आप yeah. Okay. So good. Welcome and thank you so much for coming. रमेश जी मैं थोड़ा एक बोले ना हमारे डिस्ट्रिक्ट से मैं रिकॉग्नाइज करना भूल गया. हमारे एक क्लब है साउथ सेंट्रल. उन्होंने इस बार $1 lakh they contributed for the 10 check dams. Mukesh Aggarwal and Rajnish Mittal and Dinesh Goyal, the 3 people. Very good. उनको भी हम recognize करते हैं. For them. Very good. I mean, they're tremendously. They are only working on the water and all these things. See, let me share with you, friends. Both our district 3011 and 3012, our clubs have been doing a lot of projects in washing schools. In 3011 and also 3012, the large number of washing schools projects have been undertaken under global grant. And construction of course check dams, and now we will be starting with the transformation of water bodies. If there is no other question, is there any other question? Yeah, Mahesh ji. या है आप you go to remote areas. मतलब विदाउट वाटर का मतलब ये नहीं कि पूरा वाटर ही नहीं है, बट देयर इज ए वाटर स्केर्सिटी, ये भी मान के चलिए. जैसे कहीं से वो पोर्टेबल वाटर लेके आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये है अभी भी स्कूल्स. फॉरगेट अबाउट हेल्थ केयर फैसिलिटी, देयर आर सो मेनी स्कूल्स जहां पर पानी नहीं है अभी भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस. That is why there is a lot of focus on WASH in healthcare facilities. And after COVID, it has become very, very important that we got to address. जैसे हम WASH in schools पे interventions दे रहे हैं, वैसे healthcare facilities भी पे देना चाहिए. और the costing is almost same. It is not, and it is much easier to implement WASH in healthcare facilities than WASH in schools. वहां पर you are dealing with children. Here we are dealing with only healthcare workers. एक healthcare में तो 5, 7, 10 लोग ही होंगे छोटे प्राइमरी सेंटर में. हाँ, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर मॉडल्स पे चलता है. उसमें सॉलिड वेस्ट, मेडिकल वेस्ट को भी ट्रीट करना होता है. सो दिस इज हाउ इट गोस. सो एनी अदर क्वेश्चन? एनी? या, वुड लाइक. And that water which are utilized for the agriculture and the recycling for the flash and pulp. So it is a benefit for the society. And already I have implemented so many projects in West Bengal, around the West Bengal, and it is running last 3 years. Very good. Then certainly very good idea, and I think Manish ji can throw some light, and because bio toilets are also becoming very, very popular, but in school setting it will be slightly difficult, but for household toilets
I think it's a very good idea, very good idea. और अगर कुछ शेयर करना चाहे अपने thoughts या कोई question हो, we will take those questions. Otherwise, we would like to conclude this event. अगर कुछ नहीं है तो thank you so much for coming, and attending this seminar. And my thanks to all those who could not join us today, but they are attending the seminar in virtual mode. And thank you so much all the speaker. तंवर जी, आप आए, आपने समय निकाला, and both our governors, अशोक जी और अनूप जी, और पवन जी कहाँ? पवन जी मैं देख नहीं रहा हूँ, वो he has come all the way from Rudrapur just for this seminar. And also Miss हमारी मैडम Debashree Mukherjee ji from Jal Shakti Ministry, and also the staff, the Rotary Foundation staff. Thank you so much, Ashwani ji. And I think Shakuntala has just left, and there are so many other staff. And thank you so much for coming, taking time out. And I think it was a very, very good experience, and worthwhile the seminar that we have today. And I'm sure that the key message is our Rotarians have to, the focus on water sanitation hygiene, and let us make a sustainable impact through our WASH activities. Thank you so much once again. Bye. Yeah, 3011.